In this video, we will learn about anatomy of modified roots. So first of all, we are going to start with the roots which are modified for the storage of food. So वो roots जो modify हुई है for the storage of food, now we will learn about the anatomy of that roots. Clear? So mainly storage of food is occur mainly in xylem parenchyma and somewhat of phloem parenchyma. ठीक है, बट मेनली किसमें प्रेजेंट है? जाइलम पेरेंकाइमा में. इन दिस फ्लोएम एंड कोर्टेक्स इज रिलेटिवली नैरो, कि जो फ्लोएम है और कोर्टेक्स है वो नैरो होती है एज कंपेयर टू जाइलम रीजन. क्लियर है? एंड नेक्स्ट पॉइंट ऑफ दिस इज वस्कुलर बंडल्स आर मल्टीप्लाइड मैनी टाइम्स टू प्रोवाइड स्पेस फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड. क्लियर है? So let's start with the first example of beetroot or Beta vulgaris. So this is the TS of root of beetroot. So ये beetroot की root का TS है. So mainly the outer epidermis is present, and after epidermis this is the cortex region. Then this is endodermis, then pericycle is present, and this is the primary phloem, and this is the exarch type of primary xylem. Clear? So this is the typical root of the beetroot or Beta vulgaris. So now for the modification, this pericycle give rise to vascular cambium or vascular ring. ठीक है? So एक ring formation होगी around the xylem and phloem region. So this thing we will do in our next diagram. So as you can see, this pericycle is give rise to the cambium ring. So इसमें अब क्या बन रहा है? cambium ring formation हो रही है. Okay. So this cambium ring which is arise from the pericycle now give rise to secondary xylem and secondary phloem. So इसके inner side पे क्या बनेगा? xylem, and the outer side we will draw the phloem. Clear? So let's draw it. So this is the figure which is modified form of this one. Okay. So this is the cambium which is arising from the pericycle, and from the cambium, so this is the cambium which is arising from the pericycle, and from this cambium, so जो ये cambium है उससे क्या arise हो रहा है? Secondary phloem and secondary xylem. Okay. As you can see, these xylems are not present continuously but they are present in the patches, कि वो patches में present है. ठीक है? So these are the patches of the xylem region or vascular bundles, and in between the xylem region there are the cells which are of parenchymatous type. So जो ये वाला region है बीच वाला, this is the parenchymatous type of cells. Clear? So the region between the xylem region is parenchymatous type of cells, and above the xylem phloem region is present which is secondary phloem, and in between the secondary phloem this region is the region which is known as storage parenchyma. Clear है? So mainly जो reserve food material होगा वो कहाँ पे स्टोर होगा? Storage parenchyma में ही स्टोर होगा. ठीक है? So this is the first cambial ring, and after first ring second ring is formed from the parenchymatous cell of phloem. So जो एक रिंग बनी है इसके बाद एक नेक्स्ट रिंग बनेगी, इसकी पूरी ग्रोथ के बाद इसकी ग्रोथ रुक जाएगी, इट विल स्टॉप, एंड देन न्यू कैम्बियल रिंग इज फॉर्म्ड फ्रॉम द पेरेंकाइमेटस सेल्स ऑफ द फ्लोएम. क्लियर है? ये इससे भी बन सकती है बट कुछ केसेस में दिस कैन बी डिवेल्प फ्रॉम द पेरिसाइकल आल्सो. सो जो नई रिंग बन रही है वो पेरेंकाइमेटस सेल्स से भी बन रही है फ्लोएम की, या फिर पेरिसाइकल से भी. सो आफ्टर दिस रिंग न्यू रिंग विल बी अराइज. Clear? So let's draw it. So this is the modified root of the beetroot. Clear है? So ये modified root है जो किससे modified हुई है? सबसे पहले पेरिसाइकल से कैम्बियम की फॉर्मेशन हुई. सो फिर कैम्बियम की फॉर्मेशन से सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम की फॉर्मेशन हुई. ठीक है? सो दिस इज द कैम्बियम रिंग. सो आफ्टर द फर्स्ट कैम्बियम रिंग सेकंड कैम्बियम रिंग इज अराइज्ड आउटसाइड ऑफ द फर्स्ट कैम्बियम रिंग. ठीक है? उसके बाद सेकंड के बाद थर्ड, थर्ड के बाद फोर्थ एंड सो ऑन. सो ये सारी रिंग्स क्या होंगी? अराइज होंगी. क्लियर? सो दिस इज द प्राइमरी जाइलम which is present at the center.
Okay, then this is the secondary xylem, and this region which is present opposite to the secondary xylem is secondary phloem. Okay, and these are also on rings of the vascular cambium. Clear? So as you can see, between the xylem region, these regions are present. So mainly these regions are of parenchymatous type of cells. So इस रीजन में कौन से सेल प्रेजेंट है? पेरेनकाइमेटस टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट है. ठीक है, इन बिटवीन द जाइलम. सो एज यू कैन सी, जाइलम इज नॉट इन कंटिन्यू फॉर्म. जाइलम कंटिन्यू नहीं है, वो पैचेस में प्रेजेंट है, और पैचेस के बीच में ये कौन सा रीजन प्रेजेंट है? पेरेनकाइमेटस सेल का. एंड बिटवीन द सेकेंडरी फ्लोएम द रीजन इज ऑफ स्टोरेज पेरेनकाइमा. So the region which is present between the secondary phloem is storage parenchyma. So mainly उसमें parenchymatous cell है जो क्या कर रहे हैं? स्टोर कर रहे हैं रिजर्व फूड को. ठीक है, so storage parenchyma. So this is the structure of modification of the beetroot, and this is the region which is primary phloem. So जो primary phloem है वो क्रश हो चुकी है. ठीक है, so now main characteristic of this thing is कि जो फॉर्मेशन हुई है कैम्बियम की वो किससे हुई है? पेरिसाइकल से. पहले एक रिंग बनी, उसने क्या बनाई? सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनाई. उसके बाद जो उसके बीच में खाली जगह थी वो कौन सी है? पेरेनकाइमेटस सेल की है. ठीक है, देन आफ्टर फर्स्ट रिंग सेकंड रिंग इज फॉर्म, देन थर्ड रिंग इज फॉर्म्ड फ्रॉम द पेरिसाइकल एंड सो ऑन. ठीक है, सो वो रिंग्स फॉर्म होंगी, और इन बिटवीन दिस जाइलम रीजन पेरेनकाइमेटस टाइप ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट. ओके, एंड बिटवीन द सेकेंडरी फ्लोएम व्हाट इज प्रेजेंट? स्टोरेज पेरेनकाइमा, जिसमें क्या होगा? रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर होगा. एंड द आउटर रीजन ऑफ दिस इज पेरिडर्म. जो पेरिडर्म है वो भी किससे राइज हुई है? पेरिसाइकल से ही राइज हुई है. ठीक है, सो जो एपिडर्मिस है वो मॉडिफाई किसमें हो गई? अब पेरिडर्म में मॉडिफाई हो चुकी है. ठीक है, सो द आउटर रीजन इज पेरिडर्म नाउ. क्लियर? सो दिस इज द मॉडिफिकेशन ऑफ द रूट ऑफ बीट रूट और बीटा वल्गैरिस. क्लियर? सो मेनली स्टोरेज ऑफ दिस बीट रूट इज ऑफ शुगर, कि इसमें क्या स्टोर हो रहा है? शुगर स्टोर हो रही है. ठीक है, और बीट रूट का जो रेड कलर है वो किसकी वजह से होता है? एंथोसायनिन. एंथोसायनिन विच इज मेनली प्रेजेंट इन द स्टोरेज टाइप ऑफ सेल्स, कि जो स्टोरेज पेरेनकाइमा है उसमें क्या प्रेजेंट होता है? एंथोसायनिन, जिसकी वजह से उसका रंग क्या होता है? रेड कलर होता है ऑफ द बीट रूट. क्लियर? सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टीएस ऑफ रूट of beetroot. So mainly in this what we have given, so these are the loose cell of storage parenchyma, and then secondary phloem is present. This is the secondary phloem, and this is the region which is secondary xylem, just after the secondary phloem. Clear? But in between secondary xylem and secondary phloem, a two layer thing is present which is cambium. ठीक है, so this thing is cambium. ये भी cambium है, this is also cambium. So as you can see, there are patches of xylem present in between parenchymatous type of cells are present. So these are the parenchymatous type of cell. इसके बाद फिर क्या शुरू हो गया? स्टोरेज पेरेनकाइमा. फिर क्या हो गया? ये वाला सेकेंडरी फ्लोएम, देन अगेन सेकंड इज सेकेंडरी जाइलम, एंड देन अगेन स्टोरेज पेरेनकाइमा, एंड इन बिटवीन पेरेनकाइमेटस सेल बिटवीन जाइलम एंड जाइलम स्ट्रैंड. क्लियर? सो दिस इज द सेलुलर डायग्राम ऑफ टीएस ऑफ रूट ऑफ बीटा वल्गैरिस. क्लियर? सो दिस इज द स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ द रूट फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड. ठीक है, इन beetroot. Now we will compare this cellular diagram with the cellular diagram of the radish, that is Raphanus stivus. Clear? So this is the cellular diagram of Raphanus stivus, that is radish. ठीक है, so जो उसकी रूट है मेनली उसकी डायग्राम है. इसमें मेनली this portion is periderm. Okay, so this first layer and these 2 to 3 layers of cells
is periderm. Then this layer is cortex region. Second layer is of cortex. So this region is secondary phloem. Then this is the layer of cambium. So cambium cell are present. Then this is the layer of secondary xylem. So ये किसका है? Secondary xylem. So as you can see here, secondary xylem is present continuously. इसमें क्या था, जो xylem थे वो present थे patches में, बट यहाँ पे जो secondary xylem है वो present है पूरे continuously layer में. ठीक है. Next is this is the region of abnormal cambium. So इसमें जो mainly cambium है वो abnormal type की है. ठीक है, abnormal cambium, and this region is present storage region. So mainly इसमें जो storage region है radish में वो क्या है? pith है. ठीक है. So reserve food is present in pith. यहाँ पे कहाँ पे present था? In between the xylem. ओके, सो secondary xylem के साथ present था, बट यहाँ पे कहाँ पे present है? वो pith में present है. ठीक है, और secondary xylem में. ठीक है, so this is the secondary xylem, this is the storage region, then this is the pith region जिसमें reserve food material present है, and this is the primary xylem. Okay, so this is the primary xylem. So this is the cellular diagram of the Raphanus typus, which is radish. Clear? So you can compare both of these. Done? Okay, students. So now we will compare radish, carrot, turnip, and sweet potato according to their formation of reserve food and the part which form the reserve food. Okay. So in radish, reserve food is mainly collected by the pith. So जो reserve food है वो कहाँ पे present है? pith में. ठीक है. So pith parenchyma में, जो parenchymatous type of cell है pith के, वहां पे present है. In carrot, mainly reserve food is formed by the phloem region. So इसमें किससे बनता है? phloem region से, carrot में. In turnip, mainly reserve food is stored in xylem. So इसका जो xylem region है वो mainly क्या होता है? broader होता है as compared to phloem and cortex. Phloem and cortex are narrower as compared to xylem in turnip, क्योंकि mainly reserve food किसमें है? xylem में. ठीक है. Now coming to the sweet potato. So in sweet potato, mainly reserve food is collected by the secondary xylem. Okay. So mainly जो secondary xylem है, during the formation of secondary xylem and secondary phloem, secondary xylem form more than the phloem region. ठीक है. So जो secondary xylem है वो ज्यादा बनता है as compared to secondary phloem. Clear है? In sweet potato. So mainly secondary xylem store the reserve food, but later on it separate the vascular strands. ठीक है. तो जो vascular strand है वो क्या हो जाते हैं? separate हो जाते हैं in ground tissue, कि ground tissue में separate हो जाते हैं. Because of this secondary cambia are formed. So इससे क्या बनता है? secondary cambium की formation होती है जो कि reserve food को store करता है. ठीक है, later on. So this is all about modification of fruits for the storage of food. Okay. So next thing we will do is modification of fruits for respiration, reproduction, etc. Now next we will learn modification of fruits for respiration. कि जब respiration करने के लिए plant roots को modify करते हैं. ठीक है. So let's start with it. So mainly the plants which are found in mangrove swamps are generally having modified roots for respiration. कि जो प्लांट्स मैंग्रोव स्वैम्प्स में मिलते हैं उनकी जो रूट्स हैं वो मॉडिफाई होती हैं फॉर द रेस्पिरेशन पर्पस. क्लियर? सो व्हाट आर मैंग्रोव स्वैम्प्स? सो मैंग्रोव स्वैम्प्स आर कोस्टल सॉल्ट वाटर वेटलैंड्स नियर सी शोर्स इन ट्रॉपिक्स. सो जो मैंग्रोव स्वैम्प्स है वो कौन सा एरिया है? कोस्टल सॉल्ट वाटर वेटलैंड्स नियर सी शोर्स इन ट्रॉपिक्स. क्लियर? जनरली हियर मैंग्रोव प्लांट्स आर ग्रोन. सो यहां पे जो प्लांट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? मैंग्रोव प्लांट्स. क्लियर? बिकॉज इन दिस एरिया द कंडीशंस आर होलोफिटिक. सो कंडीशन क्या है? होलोफिटिक है. बिकॉज saline water is present, so that is why the plants having specially modified roots for the respiration. Clear? So in this area, for aeration, anchorage and seed germination, spotting roots are formed. So
for the aeration, anchorage and seed germination, special supporting roots are formed in mangrove swamps. Clear? So what are the features of these type of plants? So now we will learn about features of these type of mangrove plants. First of all, pneumatophores are present. So pneumatophores, this thing we will do in detail later. Plants are of vivipary nature. So what is the meaning of vivipary? Vivipary means seed germinate before the fruit break from the plant. So vivipary का क्या मतलब है प्लांट्स में कि जो सीड है वो पहले ही जर्मिनेट कर जाता है बिफोर द फ्रूट ब्रेक फ्रॉम द प्लांट, मेन प्लांट बॉडी. क्लियर? सो दिस इज विविपेरी नेचर. लीव्स आर लेदरी, कि जो इसके लीव्स हैं वो लेदरी होते हैं. सोल्ट सिक्रीटिंग ग्लैंड्स आर प्रेजेंट. Along with this, thick cuticle is present, parenchyma and palisade cells are present. Clear? So these are the features of the mangrove plants. Pneumatophores present होते हैं, विविपेरी नेचर के होते हैं, ठीक है. Leaves are leathery, salt secreting glands are present, and thick cuticle, parenchyma and palisade parenchymatous cells are present. Okay, so these are the features of the mangrove plants. Now we will do pneumatophores in detail. So what are pneumatophores? So pneumatophores are modified root generally for respiratory purpose. So respiration के लिए होती है, modified roots हैं ये. They are negatively geotropic. They grow in upward direction above the ground. So mainly they are arise from the secondary roots which are present horizontally. कि जो मेन प्लांट बॉडी है ये उसकी जो हॉरिजॉन्टल रूट्स हैं, सेकेंडरी रूट्स, उससे ये अराइज होते हैं pneumatophores. Clear? So these are aerial roots, and on these lenticels are present. So lenticels are pores which are present at the tip of the pneumatophores which help in respiration or exchange of gases. So these are the lenticels. Clear? Height of these pneumatophore is generally 50 to 80 centimeter. Now we will do its examples. So first is Avicennia, second is Soneraceae, and third is Cereops. So these are the examples of these type of plants in which pneumatophores are present. Clear? Along with this, Bruguiera is the example in which horizontal roots bend outwards for respiration. So how they look? As you can see in this diagram, these are the horizontal roots, and this is the horizontal root which is coming outward and then goes back to the ground. Okay, this is also a horizontal root which is coming outward and goes back to the ground. So they form knees on the ground. Okay, so they are also known as knee. So जो pneumatophores हैं उनको हम knee भी बोलते हैं. Clear? So this is the example of this type of formation. Next example is of Rhizophora, in which lower side of stilt root having lenticels for respiration. So these are some examples in which pneumatophores are developed. Clear? For respiration. Now next thing which we will do is anatomy of pneumatophores. So this is the TS section of pneumatophore. So starting from here, first of all, as you can see in this, lenticels are present. After lenticels, this is the layer which is of cork layer. Then phallogens are present, and this is the cortex region in which air chambers are present. So these are the air chambers. This is the layer of endodermis. Then after endodermis, this is pericycle, and this is the region of phloem. So these are the cells of phloem.
After phloem, cambium is present. Then these are the xylem vessels. Okay, so these all are the xylem vessels. And after, the pith is present, in which parenchymatous cells are present. So this is the central pith. So this is the general anatomy of the pneumatophore. Clear? Plants having pneumatophores growing in the region where oxygen is present in scanty amount or in less amount, जहां पे ऑक्सीजन कम होती है. ठीक है. So mainly lenticels take oxygen from the environment and then transfer to the lower portion of the plant body. Okay, cork is developed from the phloems और कैम्बियम. कि जो कॉर्क है वो किससे बनती है? कैम्बियम या फिर phloem से. Next is cortex region, in which air chambers are present and some cells of cortex is chlorenchymatous. Okay, जिसमें chlorophyll present होता है. So chlorenchymatous type of cells are present in cortex. So in pericycle, some cells of pericycles are sclerenchymatous type above the phloem. So जो phloem region के ऊपर वाली pericycle है उसके सेल क्या हैं? Sclerenchymatous टाइप के हैं. So this is a sclerenchymatous type of pericycle. Then cambium is present. Vascular bundle in this is collateral conjoint type and xylem is of endark type. Means metaxylem is present towards the cortex region. Okay, so this is general anatomy of the pneumatophore. Now we will take other examples of modification for respiration. Clear है कि respiration के लिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं. सबसे पहले in hydrophytic plants, Ludwigia. So this is the example in which special roots are developed, which are floating roots. So these floating roots help in aeration of the plant. Clear? Next example is of orchid. So in orchid, epiphytic roots are present and outer layer of cells is compactly arranged, which is known as velamen. So the function of velamen is to absorb water. So velamen क्या करता है? Water absorb करता है. So especially cells of velamen absorb water. So these were the examples of modification for respiration. Now we will study about modified roots for reproduction. So both taproot and adventitious roots develop vegetative buds. कि जो taproot है and adventitious roots है, vegetative buds grow करती हैं, from which new plants are arised. So examples are Dalbergia, Trichosanthus, Murraya, Japioca, etc. So these are the examples of the birds which grow on the roots. Okay. Next example is of dahlia and sweet potato. So both of these have adventitious roots which are swollen or fleshy in nature for the storage of food. ठीक है कि जो इनकी adventitious roots हैं. So in these roots special adventitious type of birds are grown for reproduction. So these were some examples of modification for reproduction. Done.